and that is problem structuring or hierarchy building. बिल्डिंग से जैसे नाम याद आता है तो हमें बिल्डिंग ही समझ आ जाती है ना, ज़हन में हम कुछ चीजें एसोसिएट कर लेते हैं. Like if I tell you think of something, what are you thinking? So poetic, huh? Or so diplomatic. Okay. Think about something. Huh? About that technique or something. When we tell you to think about something, it becomes difficult to associate something with something, right? If I tell you think about a mobile, so you think about a mobile, what do you think? Android. You suddenly associate something to it, and then that does come. So, but we're talking about building. If I tell you about a building, like Embody or like Saaty Stadium, so something comes into your mind, like building. So, with this word, there are different stigmas of your mind has been enabled, like triggered. You know, वो सरिया भी आ गया, वो मेट्रो ट्रेन आपको आ गई याद, है ना? कुछ अब मेमोरी आपकी सारी उसको कनेक्ट करना शुरू कर देती है. भाई वो सीमेंट भी आ गया, वहाँ रेत पड़ी होती है, वहाँ में फॉग कम भी होना शुरू हो गए, फीलिंग भी आना शुरू हो जाती है. This is how our mind works. तो जब बिल्डिंग की बात की, तो it's a good word to start with. So when we talk about the problem structuring, so suddenly things come into your mind that I am going to make a building, and that building will be composed of all things. Right? कुछ ईंटें होंगी सारी होगा, तो हम यही काम करने वाले हैं. तो पहला जी जी In this case for structuring we are referring to something we already know, like Emporium Hall है हमारी नजर से गुजर चुका है, and we have something built up. जी नहीं, even हम AHP को भी कनेक्ट नहीं कर रहे. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. This is how our mind thinks, है ना? जब मैं आपको कहता हूँ think of something, तो you are unable to think something. क्या सोचो? पहले think you of a building, suddenly something comes into your mind. जब मेट्रो ट्रेन से आप कनेक्टेड हो तो वो आ जाए, है ना? तो मैंने इस लफ्ज को जो एम्फसाइज किया वो यही था, जब प्रॉब्लम आती है ना तो साथ ही एसोसिएट करें बिल्डिंग, समथिंग यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. Problem solving and decision making has become all together an area of research. People do have PhDs. People do have their research in problem solving and decision making. AHP is one part of it because it gives you assistance to make decisions based on some hierarchy, based on some technique. So that technique is the crux today we are going to tell you. Okay. Develop in this problem structuring or the problem, so we have to develop a graphical representation first in your mind, and then put it on paper of the problem in terms of overall goal, what you want to do, what are things you are going to consider, what are different alternatives you have, like we're going to buy a car. So we have to think that goal is to buy a car, and under that you have different limitations, right? We're going to study this, right? So this is how the hierarchical process works into. So this AHP has been used in different kind of areas nowadays. It is coming for ranking the problems, the issues, how you rank some problem, categorize some problem, for some decision making, for the choice, for resource allocation, like you are in an environment where you have to allocate the resources, that which resources you are going to allocate to which place. And then the prioritization of the resources, prioritization of the ideas, prioritization of the projects, different areas. When you go and Google it down, you will find different things, different papers that may motivate you to work on these issues. So when we talk about the decisions over buying a car, or choosing a city, or prioritizing some some project to be undertaken by a company, right? So decisions are varied.
So first is to identify the goal, what you are going to do. The second is to identify the criteria or sub-criteria. Now, what does this mean, criteria? Like, if I am discussing a project, so my criteria can be time, right? It can be time, resource, criteria. कितना resources को चाहिए, कितना पैसा capital में चाहिए, कितना project का time चाहिए. So these kind of criteria, if I am going to discuss it out, the buying a house in DHA or Bahia or some other XYZ society, so I'm going to have the criteria of ambience, of neighborhoods, of utilities, of amenities, of issues. So these kind of criteria, you are going to jot it down. Write it down. You have to write it down. And then what you come up, you have to identify the alternatives. Alternatives, project A, B or C, DHA, Bahia, Parkview, anything. Or when you were talking about cars, Honda, Suzuki, Toyota, imported, exported, locally, domestic. Yeah. So then you have to blend them in a graphical way. You know, remember? Graphical way of blending it. You have to write it down the goal, then you have to write down the criteria, and then you have to write down the, and this is how your structure started to look like and emerge. This is the starting point, the first step, right? We're doing for AHP to continue. Now we are thinking, which is a difficult task, right? You still have to remember and imagine those words. And then you come to a simple kind of decisions like this. This is a hierarchical way of representing our problem. Selecting the best car, the price is important, economy, fuel economy is important, comfort, style. People prefer Civic just because of style, or because of price, or because of economy. This is how we will decide. Then we have these options. Now, if at all there are certain issues available here as well, those are known as sub-criteria. Sub-criteria of comfort. Now the noise level comes into play. Seating, environmental control. This is how your comfort gets divided into sub-criteria. But when we are talking about decisions at a simple level, we tend to avoid the sub-criteria too much, because then we are indulged into a quagmire. Maybe. Quagmire means the research maybe, Adil perhaps will second me, people get into a quagmire. And then it becomes very difficult for them to get out, because then it gets hold of you. And then you can't get out easily. So don't get into that quagmire at the very start. Yes, go into quagmire, you are prepared, if you are prepared. So it can be a complex decision. Now the life becomes a little more difficult. Your company has assigned you to take some kind of production, and then you have to undergo the criteria and the sub-criteria and the alternatives for the location. And then the life becomes more complicated. So there is a structure which is having a lot of criteria and a lot of things moving on. So this is how you have to identify at which level you are going to utilize AHP. Right? From your simple daily life issues, from to complex, and then to complicated issues. So this is how the AHP. So let's work it out through an example and follow the steps in a very, very rudimentary or an easy way to start with AHP. So that we get into it. Nobody can be told what the matrix is. You have to see it for yourself. Matrix को भी देखिए आपने? ये अनु read की है, जो mind
वो जो बेंडिंग उसकी है अभी भी आपको रिकॉल करते हैं मैट्रिक्स में, कई दफा जब आप मैट्रिक्स का नाम लेते हो आपको बेंडिंग याद आती है बस, वो जो बुलेट टॉर्च का. So this is how nobody can be told what the AHP is unless you have to solve this fill. So let's start solving the fill of AHP in a easy way, right? It's not difficult. So the example I have selected is my favorite example because of many issues. Because in the life we also make such kind of decision which car to buy. When I am seeing a move here and I am seeing a Civic here and I am seeing a Mehran here and I am seeing a Cultus here, I have to make a decision. So my criteria initially will be just 4, right? Just 4 criteria. And my alternatives will be just 3. Just 3, right? Well, I will discuss that how many alternatives or how many criteria can you do it. We will discuss it in the later session. But now remember 3-4 things which we have discussed now after making this. Because we like to compare things. So now you start connecting those ideas which we discussed in a haphazard way and bring it into a concrete way. We make pairwise comparison. This is the heart and soul of AHP. You make a pairwise comparison. You like banana or you like apple? You like banana. Okay, starting from here, if you like banana, you're going to select this portion. So, which thing? You slightly favors banana over apple, or you strongly favor banana over apple, or you very strongly favor banana, or you extremely, banana na hai, apple ke dekhe. This is how we. तो अब आपका कंपैरिजन क्या है? देखिए 2 तरीके से कंपैरिजन हो गया. मैंने आपको तो वर्बल बताया, फेवर. फिर मैं आपको यहाँ पे ले आया, इसको छोड़ दिया. नंबरिंग, कैसे नंबर करते हैं. तो AHP में 3 तरीके अवेलेबल है, यूज भी किए जाते हैं. हम एक इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे, एक सॉफ्टवेयर को, उसमें तरीकेकार भी हैं. बट लेट्स फोकस ऑन आवर नंबरिंग फॉर द टाइम बीइंग. Because of the father of AHP says कि ये नंबर्स अच्छे हैं to play with. फिर नंबरिंग का हम पता करते हैं आगे क्या है, इनको कैसे डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा सा. तो दिस इज हाउ वी मेक डिसीजन. अब इन नंबरिंग का स्केल किया, इसको सैटी स्केल कह देते हैं. अब जब फादर का है तो फिर एज द फादर सेज, तो उसने कहा सैटी ने, इसको हम अपने नाम से याद किए जाए. तो उसने कहा जी एक का मतलब है कि इक्वल इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए बनाना और एप्पल एक ही जैसे. तो नंबर 1 को आप टिक कर दो और सेलेक्ट कर दो. उसके बाद 3, 5, 7, 9, वो तो कहता है इनको मैंने इस तरह से डिफाइन किया है कि ये वीक इंपॉर्टेंस है, इसकी स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, एब्सोल्यूट है. अच्छा, ये जो 2, 4, 6 और 8 है, इनकी इंटरमीडिएट है, जहां आप कहें कि यार स्ट्रॉन्ग और वेरी स्ट्रॉन्ग के दरमियान मैं लाइक कर रहा हूं, तो फिर आप उसको सेलेक्ट करें. तो सैटीज ने एक स्केल दिया, इस स्केल को यूटिलाइज किया जाता है. अच्छा, शुरू में थोड़ा सा अब्सर्डिटी लगती है क्योंकि इंसान तैयार नहीं होता ना जज करने के लिए चीजों को एट अ वेरी फास्ट वे. Sometimes it becomes a little difficult for you to understand it, but when you understand it that your mind can work in that way, then you start using this scale. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है AHP के ऊपर, एतराज भी किया लोगों ने, इसका जवाब भी दिया सेटी ने. मुख्तलिफ उनके पेपर्स हैं, 80s में अगर उन्होंने दिया तो 90s में भी कहा, 2000 में भी, उसके बाद भी, कि इनकी इश्यूज को हम कैसे एड्रेस करते हैं. तो just not bother about this issue. Everybody has some issues with this, but then and it is developed in that way. अच्छा, एक और तरीका है, अगर मैं आपको लिख दूं. अच्छा, ये the English part changes, but the concept remains the same. Extremely preferred, you prefer, you like. So extremely preferred, very strongly preferred, moderately or equally preferred. So this is kind of the same scale, but it is how you utilize it according to your decision problem, according to your research. ठीक हो गया जी? अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया. बहुत रिसर्च की.
उसके बाद ये नतीजा निकाला। इस पे शेर याद है अगर आप इजाजत दें। सब खसारों को जमा करके ये हासिल निकला, सब खसारों को जमा करके ये हासिल निकला, दिले नादा की कोई बात ना मानी जाए। ये नहीं कि दिस इज हाउ इट वर्क। तो अब जब बहुत सी चीजों को रिसर्च और एक्सपीरियंस को किया तो उसके बाद इन्होंने कहा कि प्रेफर करें, ठीक है, इज अ प्रेफरेंस। अब जब कंपैरिजन शुरू होते हैं ना तो फिर थोड़ी सी अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, हम अगली तरफ जाते हैं। जब हम बनाना और एप्पल में कंपैरिजन किया तो आपने कहा बनाना है, राइट। अब मैं कहता हूं आप चेरी और एप्पल को कंपैरिजन कंटिन्यूटी चल रहा है। अब आप बताइए, यू लाइक चेरी, राइट? ओके, दैट्स अ नाइस चॉइस। और आप किस स्केल पे रहेंगे? 3 and 5। ओके, नंबर 4 योर फेवरेट स्केल। यहाँ पे आपने नंबर 4 किया और यहाँ पे आपने नंबर 5। तो यू नो दिस इज हाउ यू आर मेकिंग कंपैरिजन। अब आ गया एक और कंपैरिजन, अब आ गया जी कि बनाना और चेरी को कंपेयर कर। Now you have shifted to banana. So now you think that when you have certain number of alternatives, certain number of criteria, you have to choose and make a decision. So AHP का heart and soul is making comparisons. अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करेंगे सारा कि comparisons कैसे, how, and then you will probably get to have a little more idea. अच्छा, अब हम करते क्या हैं कंपैरिजन से? हम थोड़ा सा मैथ्स की तरफ जाना शुरू हो गए, डायवर्जन, है ना? तो गेट रेडी फॉर दिस, राइट? Which will be a smooth ride. अच्छा जी, कंपैरिजंस का नतीजा ये निकालते हैं कि एक मैट्रिक्स डेवलप करते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है ना, एक बड़ी फिनोमिनल और बड़ी फैंटास्टिक चीज है। कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना? हमें 10वीं में 9वीं में याद होगा कि हमने वो मैट्रिक्स पढ़े थे जिसमें एक लगा के, एंड वी हैव अ स्टूपिड मैट्रिक्स ऑफ 1 रो एंड वी हैव अ इवन मोर स्टूपिड ऑफ 1 कॉलम and 3 rows, and then it comes to. So if the number of rows and columns are equal, what we call that matrix? Square. So in AHP, we work on square matrix. So when we're making decisions, you make a square matrix, and each of your matrix or each of your element of that matrix is composed of I and J, है ना? rows and columns। अब थोड़ा सा वो पुरानी मेमोरीज की मजे है ना, वो एलाइटन उन्होंने आपको फाइल किया कि वो याद आया, है ना? और उसी के साथ आपको मैथ्स का टीचर याद आया, उसी के साथ से दिस इज हाउ आवर लाइफ वर्क, दिस इज हाउ वी मेक दिस। अच्छा, weight of row criteria relative to, relative means comparison, in comparison to the weight of। तो ये एलिमेंट एक है, इस तरह के एलिमेंट मिलके बनाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? है ना? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो एक फार्मूला भी दे दिया छोटा सा, हो गया, कुछ भी बड़ी बात नहीं आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसने कहा जी नंबर ऑफ थिंग्स जो कंपेयर कर रहे होंगे अगर वो 4 तो आप 6 कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये फार्मूला है n into n minus 1 divided by 2। सही हो? 4 4 1 4 3 2 divided by, and it comes to 6। तो 6 कंपैरिजंस कर रहे होंगे। 6 कंपैरिजंस का मतलब ये है कि आप उन 6 कंपैरिजंस को यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? हम अभी करेंगे। अब हम कैसे कंप्लीट करते हैं इसको, कैसे कंप्लीट करते हैं? The evaluator जो कि आप हैं gives only values, जो सेल्स हमने एलिमेंट्स की बात की, in the upper part of the matrix, in the upper part of the matrix, because the cells on the diagonal will be having a value of 1. Banana is compared with banana other than
वो इक्वली हो गया ना, ये तो 1 पे आ गया, तो वो 1 डायगोनल पे आ गया। और जो अपर पार्ट हम फिल करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और उसका जो लोअर पार्ट है दैट विल बी रेसिप्रोकल, राइट? सिंपल। ये जरा देखिए, अब हम एक एग्जांपल को शुरू जो किया वो ये था कि एग्जांपल ऑफ बाइंग अ कार, और हमने कहा कि कार के अल्टरनेटिव। अच्छा, होता क्या है इसमें, हम कैसे चलते हैं? हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने अल्टरनेटिव से किया, हमने जब अल्टरनेटिव से किया तो उसका जो हायरार्की में इससे ऊपर है उसका रेफरेंस लेके हम अपने शुरू करते हैं कंपैरिजन। लाइक इस अल्टरनेटिव का हमने लिया कंफर्ट का, सो बेस्ड ऑन कंफर्ट you have to make comparison between these three, and then we have to do it for economy, we have to do it for price, we have to do it for and you have to make a square root. And in that you just see in row there is a car A, in column there is a car A. So for this you can see a spot one here, and now it comes comparing with car A with car B, like we are making comparison. So 2 means car A is a preferred choice as compared to car B in the comfort criteria. So this has to be linked up, right? Make sense so far? So for this, car A is highly preferred, strongly preferred. I mean, it's not obsolete. Obsolete means 9. Obsolete means 9, but it is strongly. So 8. So you have to put it there. Then comes another column, the next row, and then come 1, and then the 6. Now you have to do it like this. That's it. You have completed it. Now for the next, you just have to perfectly. ठीक हो गया? Now after making one comparison and discussing all the other ways to compare things, we have come to the second part of our, that is the synthesis, which is another important thing in the AHP. Priority calculations, how you prioritize or make calculations based on this, right? The procedure to estimate the relative priority for each decision alternatives in terms of the criteria is referred to as synthesization. Sometimes some words get stuck into your mouth. Statistician. People can't say it. Some people can't say it even. Statistician. Right? So, synthesization or something like that. But synthesis is the word you use. Of each decision alternative in terms of criteria, then you refer to synthesization. We have to follow certain steps for this, right? Once the matrix of pairwise comparisons have been developed, priority of each of the elements, priority of each element on specific criteria, right? Priority of each criteria on the goal. Like this is how we are moving from bottom part to upper part. Priority of each alternative on specific criteria. You remember that we have alternative. We used one criteria, that was comfort, and then we do it. And then we have to go from the. We have to do it in that way. So we can possibly weight them differently, like comfort has a different weight compared to style. Oh yes, 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 of course. That is how the AHP is going. I am going to show you. The exact mathematical procedure required to perform synthesization involves the computation of eigenvalues and eigenvectors. Have you been introduced to some kind of eigen thing? A little bit. पढ़ा हुआ ना? हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों? उसकी एक रीजन है. Because when you are using some software to do this stuff for you, so you have to know that what value is coming.
स्केलर का कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स, और एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। वेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कि जी सिंगल रो मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रो एंड सिंगल कॉलम। हाँ, और एक अगर उस सारे को हम ले आए एक नंबर में तो वो होगा। हाँ, अगर हम सारे मैट्रिक्स को बंद करके एक नंबर में लें तो वो आइगन वैल्यू होगी सही। अच्छा, ये एक आइगन वैल्यू कैलकुलेट, लेकिन हम एक और तरीके से भी करेंगे जो हम करेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे सॉफ्टवेयर चीजों को मैनिपुलेट करते हैं। सिंपलिसिटी इज कॉम्प्लेक्सिटी रिजॉल्व। अभी आइगन वैल्यू की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में जाने से बेहतर क्या है कि हम थोड़ा सिंपलिसिटी, और इसको अप्रोक्सीमेशंस को वेरीफाई किया गया आफ्टर डूइंग सर्टेन कैलकुलेशंस कि ये आइगन वैल्यू के करीब करीब जाते हैं, तो उनको अडॉप्ट किया गया जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशंस। लेकिन सॉफ्टवेयर में मसला नहीं होता, दे हैव अ ह्यूज प्रोसेसिंग पावर, क्योंकि मशीन में ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है ना मशीन लर्निंग में, तो उनका वो यूज करते हैं। तो वी विल बी रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स टू दी अच्छा, ये नीचे वाला जो है ना वो मैं खा लेते हैं, इसको हाइड नहीं हम कर सकते, वो जो हाँ इसको हाइड कर दें कई दफा, वो जो टास्क बार है इसको क्लिक कर दें शायद। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, परफेक्ट। सो अब ये आपने सिंपल बता दी है जब कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व कर दी। सो दिस इज हाउ दिस इज आल्सो we will be restricting ourselves to the approximation values generally used for the calculations. अब हम देखते हैं कि वो क्या है। दो मेथड डिस्कस करेंगे। पहला मेथड, अच्छा इसमें इतनी बड़ी अंग्रेजी लिखने का कोई मकसद नहीं, सिर्फ डराना आपको मकसद, वो डर गए, लेकिन आप उसमें से हाईलाइट कर दिए दो तीन चीजें, जैसे सम को हाईलाइट कर दिया और एडिट को कर दिया, बस यही कंसंट्रेट करना, राइट। All cells in an individual column of the matrix are divided with the sum of the cells of the given column. एक column उसके sum of the cells से divide करते हैं, right? Then all those values are added in a line and then sum is divided with the number of comparison. Not number of comparison, with the alternatives or the criteria number. The result is a vector of क्राइटेरिया, राइट, तो ये हम निकालते हैं। और दूसरा, इसको कुछ करने के स्टेप्स हैं, एक स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 क्या है, पहले सम निकाल लेंगे, वो हमने बड़ी तेजी से पढ़ा, तो हमने कहा थोड़ा सा इसको ब्रेक करके देखें। जिस तरह के AHP का हार्ड एंड सॉल्व क्या है, कंपैरिजन है और ब्रेक करना है ना। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स उस पूरे जुमले को ब्रेक किया कि सम ऑफ द वैल्यूज इन ईच कॉलम, पहले स्टेप में दूसरे में डिवाइड ईच एलिमेंट इन द पेयरवाइज मैट्रिक्स बाय इट्स कॉलम टोटल, जो कॉलम का टोटल नीचे लिखा था उस सब से डिवाइड करेंगे टू नॉर्मलाइज, ठीक हो गया। तीसरा क्या है जी, कंप्यूट द एवरेज ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच रो, इन सब को इन अ रो ऐड किया और डिवाइड कर दिया।